All right. Good morning, guys, again. And let's start ahead with the wireframe stage. So, yesterday we saw the wireframes for the mobile app, correct? So, we'll quickly just see as to what is the difference in the website wireframe in the web app wireframe, right? So, let's take the same example of pitch.com. Yeah. So, since this is a final design, it would be easier for us to think as to how should I design the wireframe, right? But there are few things that we have to take care while designing the wireframe, okay? For the web and for the web app. Oops, I think that's not seen a big one. Yeah. So remember the first thing that I mentioned, the very first call or the second call was about the viewport, correct? So first we take the desktop of width 1440, and since we know that the height for this is either 1024 or 900, so we'll take it as 900 and we'll minus 250 from there. So our viewport would be 750 for this particular width, which is 1000. So here on the ruler, I've set it as 150. Yeah, and see on the left ruler, we have 150. Right. So now I know that in my first fold, whatever I design is going to be visible. So I'll also set my viewport width as 1440 and right. So let's see if it is set or not. So this should be visible partially, right? So if I preview it, yeah, this works well. So we have the viewport set. Perfect. Alright. Now moving ahead. So in a website, we know that the navigation is always on the top. And if you remember, we did this navigation piece where we know that the menu item should not be more than 7 or maximum of 9. Correct? For the website, we saw the different sort of navigations also. Correct? So now let's take this navigation. That's a temporary piece. And now, what are the different ways in which we can design the first fold? So first option is very simple, just like which click on UI UX, right? Increase the font size for this. Yeah. And let's take some content from the website itself. So imagine अभी मैं ऐसा अगर text दूंगा, so it is going to be so difficult for the user to read, right? It's not good for the eyes. तो हम इसको हमेशा थोड़ा छोटा करेंगे, not the font size, the width, right? The width.
so that it's easier to read. क्योंकि जब यूजर इसको डेटा को देखेगा वो स्कैन करेगा, वरना ये वाली लाइन नहीं पढ़ेगा सेकंड है, ठीक है, वो ये लाइन ही पढ़ेगा, बिकम अ यूआई यूएक्स डिजाइनर इन 2 months, और ये लाइन ही पढ़ेगा। अब उसमें भी अगर मान लो ये ऐसी स्ट्रेच होगी तो इट इज डिफिकल्ट, यूजर यहाँ से यहाँ तक पढ़ेगा, वो डिफिकल्ट है। तो इसीलिए व्हाट हैपेंस इज वी keep it in a small box compared to the previous option, so that it's easier to read. So this is one thing that you have to take care of. The things should be easier to read. Correct? अब ये थोड़ा बेटर है पढ़ने, कॉल टू एक्शन डाल देंगे, बटन्स को क्या बोलते हैं, कॉल टू एक्शन। रजिस्टर नाउ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमारा कोई एलिमेंट आने वाला है, जस्ट ऐड सम बॉक्सेस। ये लेयर्स पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर इफ यू रिमेम्बर, इफ यू सी, ये मैंने जब डाला तो ये डेस्कटॉप के ऊपर है, दैट मीन्स जब मैं इसको प्रीव्यू करूंगा ये नहीं दिखेगा, क्योंकि इस फ्रेम के अंदर नहीं है। सो आई हैव टू फर्स्ट सिलेक्ट द फ्रेम एंड देन सी, ठीक है। तो ऐसे सब चीजें ध्यान रखना, have something here and something here ऐसा, and then I'll इसको बड़ा करने के लिए कंट्रोल एंड दिस ड्रैग डाउन। अगर मैं बिना कंट्रोल के ड्रैग डाउन करूंगा तो ये पूरा चेंज हो जाएगा, राइट, ये पूरा हिल जाएगा। In many cases this would start enlarging, so control दबा के करना। Now the next section, say we have who is it for, okay, on the website. So अब उसमें if we see, इसको थोड़ा मैं बोल कर, अब उसमें if we see there are two texts, one is above the title and one is smaller one. तो इसमें फॉन्ट हायरार्की ऐसी है कि अगर मैं इसको इसके ऊपर डालूंगा, इमेजिन करो अगर मैं एक बेसिक फॉन्ट हायरार्की ट्राई करता हूँ, यहाँ पे ये बड़ा है जो आइडियली लोग करते हैं। अगर मैं ऐसा कुछ ट्राई करूँ और इसको मैं थोड़ा छोटा करूँ, just to create a hierarchy, it still won't look good. ये ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, राइट, क्योंकि who is it for, are you one of them, ये दोनों को इतना वेटेज है, और are you one of them again, इसको मैं ये भी कर दूं तो भी ये विजुअली मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है यार कितना सारा टेक्स्ट है ना। सो सॉरी फॉर द यार्न गाइस। तो इसलिए हम इसको ऐसे रखते हैं जहाँ पे एटलीस्ट आई फोकस ऑन वन थिंग, आर यू वन ऑफ देम, करेक्ट, एंड देन फिर इसको हम थोड़ा ब्यूटीफाई करेंगे, यहाँ पे इसको हम थोड़ा बोल्ड, इसको बोल्ड, इसको, so that I know that we are talking about these three users. And always remember, ये industry insights नीचे गया, right? Never keep one word at the bottom. Last line में कभी भी एक single word मत रख. You can take the industry also down. लेकिन कुछ भी हो जाए, never keep one word down. Okay? It is not a good practice. क्योंकि वो one word जो है, it does not look nice. And reading में it creates a hindrance. Just the one word. And then here we also have some, correct, प्रोजेक्ट। सो ऐसे हम वायरफ्रेम्स बनाते हैं फॉर द वेबसाइट। अब इसी को अगर मुझे रिस्पॉन्सिव बनाना है तो मैं क्या करूँगा,
नेविगेशन तो मेरा है यहाँ पे. I'll take this navigation. कॉन्ट्रैक्टर्स हाईलाइट कर दिए, बाकी सब हैमबर्गर में आ गया. अब इसको ही सबसे पहले मैं यहाँ ले लूँ. दिस इज द टेक्स्ट दैट आई वांट टू सी. करेक्ट. तो इसका फॉन्ट साइज में कम कर देता हूँ. आई स्टिल कीप द कॉन्सेप्ट द सेम. एंड अगेन रिमेंबर, 12 font only for the rarest use, not for the regular use. 12. अब इसमें से दोनों में से कोई एक इमेज ना आई कैन यूज योर. बट इफ यू सी, अगर मैं इसका एनलार्ज करता हूँ तो ये बहुत बड़ी हो जाती है. इमेजिन अगर मैं इसी को ऐसे यूज करता हूँ तो इतनी बड़ी है. डजंट मेक सेंस. करेक्ट. सो रादर व्हाट विल डू इज either we can add another image altogether for the responsive. ठीक है इसको. और बाय द वे, मोबाइल में भी हमने आर्टबोर्ड देखा था. सो अब ये रिस्पॉन्सिव है. सो आई टेल यू फ्यू थिंग्स अबाउट रिस्पॉन्सिव. जस्ट सो रिस्पॉन्सिव जब हम देखते हैं, इट इज नॉट अ मोबाइल ऐप. इट इज of course going to be opened in a browser. So we will add few things. That's just, I am trying to find the panel of Google Chrome for the mobile. Yeah. So basically, if you see, you will have a top bar. Correct. Yes, this is very correct. Yes, ये देख. करेक्ट. सो हमारा जो टॉप बार है वो इतना ऑक्यूपाई हो जाता है. करेक्ट. दीज आर टू थिंग्स. दिस इज सफारी एंड दिस इज क्रोम. सो क्या होगा इसमें, जो हमारा स्टेटस बार है वो एक ऊपर होगा. उसके बाद नीचे हमारा टॉप मेनू होगा, जहाँ एड्रेस बार, जहाँ पर एड्रेस यूजुअली हमारे केस में ऊपर होता है क्रोम में. एंड देन वी हैव द नेविगेशन हियर एट द बॉटम. बट इफ यू सी क्रोम, उसमें जो एड्रेस बार है वो ऊपर है एंड जो नेविगेशन है वो नीचे है. करेक्ट. सो विल लीव द स्पेस. इफ यू सी दिस 94 पिक्सेल्स. करेक्ट. तो हम इसको नीचे लेंगे. we'll create a box of 94 pixel for now to leave it so that we know कि हमारे ब्राउजर के फोल्ड में कितना आ रहा है. करेक्ट. ठीक है, ये हो गया. I'll add one ruler here that later on we can remove this. And then ये हमारा 78 पिक्सल है. 78. एंड ये होगा कहाँ पे. सो हमारा जो 812 का जो ग्रिड है, क्योंकि दिस ब्राउजर उसका हाइट कितना है, हमने जो लिया है उसका 3812 था. 375/812. तो हम 812 पे हम
812, ठीक है। 812 से ऊपर इज आर नेविगेशन बार फॉर द क्रोम। सो दैट मीन्स हमारे पास जगह कितनी है, इतनी। समझ में आ रहा है? सो दिस इज 94 पिक्सल हाइट and this is 78 pixel height। ठीक है, क्लियर है? सो ये हमारी इतनी जगह हमेशा छूट जाएगी। सो नाउ इफ आई व्यू दिस इन द व्यू पोर्ट, इसका मैं काम करता हूँ, अलग से बनाता हूँ। तो रीजन बीइंग हमारे प्रोटोटाइप पढ़ना अलग बताएंगे। साइट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स this this, ठीक है। अब इसको हम दोनों को फिक्स कर देंगे, ये दोनों को, क्योंकि ये फिक्स हो जाता है जब हम स्क्रॉल करते हैं। सो जस्ट राइट नाउ इफ यू चेक योर क्रोम, राइट, उस पर अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, सो आपको दिखेगा कि ऊपर का बार और वो जो नीचे का बार है वो हमेशा फिक्स रहता है। स्क्रॉल पे शायद चला जाता है, हाँ क्रोम में सी, इफ यू सी द एक्सपीरियंस, स्क्रॉल पे वो चला जाता है और ऊपर का बार थोड़ा छोटा हो जाता है, ऊपर का बार थोड़ा छोटा हो जाता है, बट दैट्स फाइन बिकॉज एनी विच वे। सो दैट मीन्स हमको इसको फिक्स करने की जरूरत नहीं है। सो हम क्या करेंगे अभी इसके, अगेन ये जो हमारा साइज है 24, विल कीप इट सेम। इसको हम करेंगे 16 एंड ये हमारा था 14, 14। एंड यहाँ भी हमारी जो इमेज थी लेफ्ट में, ये जो हमारी लेफ्ट में इमेज थी, अगेन दिस विल आल्सो कम डाउन, ठीक है। रिस्पॉन्सिव में चीजें नीचे नीचे आ जाती हैं। Now let's set the prototype for this. Schedule iPhone 13 mini. Yes, yeah. Now let's see the prototype. Yeah. Perfect. We can see things in viewport. So यहाँ पर एक मेरी गलती हो गई. We don't have to do it after this. It's going to be after this only. इसको मैं ग्रुप करके पीछे ऊपर डाल देता हूँ and let's keep it fixed for now, so that when I see the prototype I know कि ये व्यू पूरा ऐसा दिखेगा, right? So this is how we do the websites and the responses. Any doubts guys so far? सफारी इज अ ब्राउजर आदित्य, जैसे हमारा क्रोम ब्राउजर है तो वैसे ही सफारी भी एक ब्राउजर है फॉर मैक ओएस। Any doubts, any issues guys? Am I going fast? So please let me know. I can again explain you stuff. Are we good? Okay. So quickly in 5 minutes, only in 5 minutes, ठीक है, मैं 78 पिक्सल वाला समझाता हूँ, but in 5 minutes what you guys have to do is you guys have to design the web version first, ठीक है। इट्स सिंपल, क्योंकि नेविगेशन हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। सो आपको ये दो सेक्शन बनाना है वायरफ्रेम, और ये वायरफ्रेम के सेक्शन भी हम कैसे डिफाइन करते हैं, आई विल कम टू दैट। सो जस्ट फर्स्ट डिजाइन दिस इन 5 minutes and then I'll explain the ideation part, how to think about the
uh, folds. So 78 pixel is nothing but if you see your Chrome browser right now on a mobile device, correct? आपको दिखेगा कि ऊपर there is a space, ऊपर there is a space. So वो जो स्पेस हमको छोड़नी है उसकी वो हमने जगह रखी है. वरना क्या होगा अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव में अगर मैं ये हटा दूंगा 94 और ये 78. 78 इज अ नेविगेशन जहाँ पर वो बैक आता है और वो सब आता है, करेक्ट? सो अगर वो मैं हटा देता हूँ तो मुझे लगेगा कि मेरा व्यूएबल एरिया तो इतना है. तो जब मैं इसको व्यू करूंगा तो ऐसा दिखेगा. लेकिन एक्चुअली यूजर को ये जो पार्ट है हु इज इट फॉर वो नहीं दिखेगा, करेक्ट? तो इसलिए भी कीप दिस. ठीक है. सो प्लीज स्टार्ट डिजाइनिंग द वेब वर्जन. आई विल कीप इट ऑन द नेक्स्ट. आई एम पेस्टिंग दिस कंटेंट फॉर यू गाइस इन द चैट. तो आप वो यूज कर सकते हो. आपको लिखना नहीं पड़ेगा, उतना टाइम बच जाएगा. मैंने चैट में सारा कंटेंट डाल दिया है. So you guys can use it. ठीक है. 5 minutes. So Shida, you need to design this wireframe. I have added the content on the chat.
Done, guys? हो गया? Okay. ठीक है, take another time. सुनो. Oh, sorry. Whoever is done, please send your screenshots on the group. I hope the learning pattern is simple for you guys to understand and to cope up. I hope that it's not too fast. Are you guys understanding whatever we are doing in the lectures? The approach, the practical approach. Okay.
So this coming 3 weeks, that is next week, after that, and after that, we may have our lectures on weekends also. All right, just to cover up the entire course. So we may have say 4 to 5 lectures in a week. Yeah, I'll keep you guys updated because how we are doing it right now for the wireframes, we'll also do the same for the UI design. And the assignments would be that you guys have to complete these projects. So right now what we are doing is say a few screens of a mobile app or a website, right? So you guys will have to complete the rest of the screens and send it to me because that is going to be part of your portfolio, the entire screens, at least the basic ones, if not all of them, at least the basic ones. Yeah. So everyone now needs to be on their toes, needs to be very alert. All right, please share your screenshots on the group, guys. It's been more than 10 minutes now. And the layout is finalized, the content is pasted. It should not take more than 5 minutes for this particular piece for these two sections. Please share screenshot. जितना भी हुआ है, please share it. Okay. So Aditya, आपने मोबाइल का क्यों शेयर किया? एंड सेकेंडली, इफ यू सी आपका अलाइनमेंट ऑफ है, आपका नेविगेशन नहीं दिख रहा है. अगर आप मेरा अलाइनमेंट देखोगे, इट इज ऑल सेंटर अलाइन, द फर्स्ट फोल्ड. एंड जो सेकंड वाला जो कंटेंट है, हु इज इट फॉर वाला, उसके नीचे जो है बिगिनर्स विद नो प्रायर, तो उसमें भी सी मैंने बोल्ड किया है, उसको सेपरेट किया है. सो ऑल दोस नेटिग्रिटी नीड्स टू बी देयर. हाँ, ये अच्छा है सुकेशा, भले ही फर्स्ट फोल्ड किया बट इट इज गुड. खाली एक चीज, जो बिकम अ यूआई यूएक्स डिजाइनर, उसका फॉन्ट साइज और बड़ा होना चाहिए. रेस्ट इज इट इज गुड. Nice. Good work, Nishi. Again, good work, Stuti. Just सिर्फ उसका जो आपका जो फर्स्ट फोल्ड है, उसमें जो बॉक्सेस है, उसके मिडल अलाइन होना चाहिए. So if you look closely, right, this particular piece is middle aligned to these two boxes, right? तो खाली उतना फिक्स कर देना, आपका अभी टॉप अलाइनमेंट है. रेस्ट इट इज गुड. एंड अगेन जो नीचे वाला जो सेक्शन है, उसमें सब कुछ लेफ्ट अलाइन कर दो. अभी जो है वो थोड़ा आपका जो टेक्स्ट है, बिगिनर्स विद नो एक्सपीरियंस, वो बहुत बाहर जा रहा है लेफ्ट में. So everything should be in the same line. If you see this, yeah, yeah. So everything needs to be aligned. है ना? आपके इसमें वो बस align है. Rest everything is fine. Only these 2 points. Others, please post जितना भी हुआ है. Whatever it's done, please post. जैसे सुकेशा ने भेजा है एक सेक्शन, even that is fine. जो भी हुआ है, please send. ठीक है, I'll wait for it. Please send it. And in the meanwhile, let's move ahead.
Yes, Supriya, you had raised your hand. Supriya, सुप्रिया आपको कुछ डाउट है? All right, so let's continue. So can you please change the evening time? Okay, as in, so instead of morning, you are saying to evening. Acha, oh, morning is fine. Oh, so the thing is, others, are not available in the morning because they have, odd timings for their work. So some of them leave at around 7:30. The evening time is not suiting because of job. I understand, but majority of them are not, available in the morning part. So that's why. So even I wanted the morning batch, but the thing is, the majority of them are not available in the morning. So that's why. Yeah, we can do it late. That's fine. We can do late in the evening. We can do the lectures at 9. Is everyone available at 9 p.m.? Okay, fine. So we'll do it at 9. I'm fine with 9. So Priya, 9 works for you? Perfect. Cool. So we'll do it 9 then. Everyone is available at 9. Perfect. Done. So the problem solved. Okay. So yes. So now moving to the responsive bit of it. So responsive, I won't design. I'll show you guys rather. And by the way, एक और चीज जो आप सबको अभी देखनी बाकी है, तो that this is the right time to do that. If you remember, हमने थीम फॉरेस्ट में एक वेब ऐप देखा था, करेक्ट? दिस वन मेट्रॉन, करेक्ट? सो अभी हमको क्या करना है, रेदर आप लोगों को क्या करना है, इसमें ना बहुत सारे पेजेस है जो आपको एक बार गो थ्रू करना है. जैसे फॉर एग्जांपल, ये जो ये हम बोलते हैं इसको कंपोनेंट्स, राइट? अब ये सब जाने दो, ये एक्चुअली पूरा ही जाने दो, ये भी ये. सो अब ये ना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे विद द कोड. लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल.
Let's see if we have on this one. Oh, it's terrible. This is good. ठीक है, अब ये वैसे तो एक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, बट इसमें हमको देखना है क्या है। ये आपको लेफ्ट साइड में जो भी दिख रहा है, नॉट ऑल दिस, गेट स्टार्टेड भूल जाओ, कस्टमाइज भूल जाओ, लेआउट है। ठीक है, सो लेआउट से आपको शुरू करना है देखना, आपको बस एक बार ग्लांस करना है। ठीक है, ये सारी चीजें, कंटेनर किसको बोलते हैं, द डिफरेंट साइजेस ऑफ कंटेनर। ठीक है, अब इसका मैं आपको बता दूं, एक्स्ट्रा स्मॉल इज द मोबाइल। ठीक है, स्मॉल इज से और मोबाइल ही है वो भी, लेकिन यर इट कैन बी आइदर आईफोन, दिस इज आईफोन 13 मिनी and this is say a big mobile iPhone Pro or something, correct? Medium is a tablet, even large is a tablet. XL is, you can say, a laptop, and double XL is a desktop screen. ठीक है, अब इसमें इन्होंने आपको कंटेनर की साइज दी। ठीक है, क्या है कंटेनर वो सब भूल जाओ, वो हम कवर करेंगे यूआई में, लेकिन फॉर नाउ जस्ट सी व्हाट इट इज, सिर्फ उसको देखो, राइट, इस पे से नजर डालो, स्पेंड सम टाइम, करेक्ट। तो जैसे ये कंटेनर हो गया, उसके बाद एक बार ग्रिड देख, ग्रिड मत देखो, सर कंफ्यूज हो जाओगे, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आप सबको। समझ में आता है तो एक बार नजर डाल देना, आई डोंट माइंड। मेन जो पार्ट है ना वो यहाँ से है, फॉर्म्स। ये फॉर्म्स वाला दिख रहा है, कुछ नहीं देखो ऊपर का चलेगा, फॉर्म्स जरूर देखना। अब फॉर्म्स में क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफकोर्स फॉर्म। अब फॉर्म के ये सारे जो एलिमेंट्स है ना, उसको क्या बोलते हैं वो आपको समझना है। ठीक है, वो आपको समझना है। तो जैसे मैं फॉर्म कंट्रोल पे गया, यहाँ पे सिलेक्ट, हाँ सिलेक्ट पे गया, सो अब सिलेक्ट किसको बोलते हैं, सो ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसको हम सिलेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, सिलेक्ट मेन्यू। अब दूसरा है, चलो मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। दूसरा है चेकबॉक्स एंड रेडियो बटन। अब चेकबॉक्स और रेडियो बटन में फर्क क्या है, ऑन अ चेकबॉक्स आई कैन सिलेक्ट मल्टीपल थिंग्स। ठीक है, बट ऑन अ रेडियो आई कैन ओनली सिलेक्ट वन, दैट्स द डिफरेंस। तो जहां पर मुझे मल्टी सिलेक्ट देना है, यू विल हैव अ चेकबॉक्स, जहां पर मुझे सिंगल सिलेक्ट देना है वहां पर वी विल हैव रेडियो। अब स्विच भी रेडियो बटन ही है, क्योंकि इसमें भी मैं आइदर और सिलेक्ट करता हूँ। क्लियर, आइदर और सिलेक्ट करता हूँ, टॉगल बटन अगेन वही है। इसको ऑन ऑफ करोगे, इट इज द सेम। अब आता है हमारा रेंज स्लाइडर। अब ये जो है इसमें मैं सिंगल चीज सिलेक्ट करूंगा, माय अपोलॉजीज, इसमें मैं सिंगल चीज सिलेक्ट करूंगा, लेकिन रेंज इज दिस, नहीं दिया है क्या, सो रेंज इज, इसको भी रेंज ही बोलते हैं, लेकिन रेंज में भी एक और टाइप है जहाँ पे यू विल हैव फर्स्ट मिनिमम एंड देन यू विल हैव मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ इन्होंने नहीं दिया है वो, पर दो ऐसे सर्कल्स होंगे आपके पास सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है,
सेकेंड इज इनपुट, इसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट फील्ड, राइट। इसको हम बोलते हैं इनपुट फील्ड, इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट एरिया, जहाँ पर आप बहुत सारा ऐसा टेक्स्ट लिख सकते हो और फिर वो नीचे नीचे ऐसा आता है। टेक्स्ट फील्ड में वो नीचे नहीं आएगा, वो ऐसे साइड में चला जाएगा। सीरियस, ये तो टेक्स्ट फील्ड विल ऑलवेज बी वन लाइन, टेक्स्ट एरिया इज मल्टीपल लाइन। ठीक है। लेबल्स, अब ये जो दिख रहा है ईमेल एड्रेस लिखा हुआ, इसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर, क्योंकि वो इनपुट फील्ड के अंदर है, उसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। लेकिन अगर यही चीज मैं क्लिक करता हूँ ऊपर चला गया, दिस इज नाउ द लेबल। ठीक है। जब वो सिर्फ व्यू ओनली है ऐसा, जैसे एक और ये इनपुट विथ लेबल, राइट। सो ये ऊपर मुझे लेबल दिख रहा है और नीचे मेरा वैल्यू है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, वैल्यू। और इसको मैं क्या बोलता हूँ, लेबल। ठीक है। सो अगर मैं इसको और एक एग्जांपल के साथ बताऊं, हाँ ये रहा। सो ये ईमेल एड्रेस जो दिख रहा है ना, दिस इज माय लेबल, क्योंकि वो डिफाइन कर रहा है कि ये इनपुट फील्ड क्या कर रहा है, इनपुट फील्ड में हम क्या ले रहे हैं। सो इस इनपुट फील्ड में मैं क्या ले रहा हूँ, ईमेल एड्रेस। और ये जो नेम @example.com दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है। प्लेस होल्डर टेक्स्ट एक आपको एग्जाम्पल देता है कि इसके अंदर क्या टाइप ऑफ टेक्स्ट आना चाहिए। उसी का एक वेरिएशन हमने ये देखा, जहाँ पे आपको कोई वेरिएशन नहीं देना है, एग्जाम्पल नहीं देना है, क्योंकि आपको पता है ईमेल एड्रेस कैसा होता है। तो आप क्या करोगे, जगह रोकने के लिए यू विल हैव अ फ्लोटिंग लेबल ऐसा। तो ये अभी प्लेस होल्डर है, क्लिक करने के बाद ये लेबल बन जाएगा। क्लियर। दिस इज इनपुट फील्ड और दिस इज द पासवर्ड फील्ड। पासवर्ड फील्ड का स्पेसिफिकेशन ये है, द डेटा गेट्स हिडन। ठीक है। अब आते हैं और सारे कंपोनेंट पे, विच इज दिस। तो ये सारे आपने देखे तो होंगे ही हमेशा, लेकिन शायद आपको नाम नहीं पता होगा। जैसे अकॉर्डियन, एक टाइम पे जो एक चीज ओपन होती है, एक टाइम पे मल्टीपल भी ओपन हो सकता है। दैट्स ओके। सो ये आपको खाली आज गो थ्रू करना है, व्हाट आर द डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स, उसको क्या बोलते हैं। कुछ डाउट होगा, सो लेट मी नो इन द लेक्चर। ठीक है, टुमारो। सो फार गुड गाइस। ऑल गुड गाइस। आई विल सेंड यू दिस। मैं फॉर्म ओवरव्यू से भेज रहा हूँ, आपको यहाँ लेफ्ट में दिख जाएगा। ठीक है। कूल है। ठीक है। सो एक अभी असाइनमेंट आपका ये हो गया, आपको ये गो थ्रू करना है डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा असाइनमेंट मैंने ऑलरेडी कल दिया था, wherein you guys have to complete the wireframe for the mobile app that you have done. So वो आप कल तक करोगे, it's fine. ठीक है। Do that by tomorrow. So is everyone okay with morning time for tomorrow, which is, या सबको सोना है 9 to 11, or sorry, we'll have only 1.5 hour lecture, क्योंकि आई थिंक दिस टाइम इज फाइन। 2 घंटा थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। इज 2 hours fine or is 1.5 hour is fine what we are doing right now? Write in the chat 1.5 hour or 2 hours. Okay, option one, 1.5 hour. Option two, 2 hours. Perfect. So everyone is with option one. Cool. No worries. This is good. So done. So we'll wind up here today. You guys have the assignment. Okay, Sukesha. No worries. ठीक है। So I'll still update the time कि अगर मुझे भी कल सुबह कुछ अवेलेबल नहीं हुआ मैं, तो I'll do it in the evening only. No worries.
ठीक है. So two assignments, go through the documentation that I've sent. I'll also post them. Just a second. And then you guys have to complete the mobile wireframe. Okay, sari screens, because that is going to be part of your portfolio. Remember, even this website that we are doing right now is going to be part of your portfolio. और जो वेब ऐप है, इट इज ओके अगर वो हम पूरा कंप्लीट ना करें, अगर आप उसकी एक दो स्क्रीन भी बनाओगे दैट्स फाइन. उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है. ठीक है, वो हम करेंगे और भी जब यूआई बनाएंगे. तो जब वायरफ्रेम आपकी होगी उसके बाद ही हम विल मूव अहेड टू द यूआई डिजाइन. सो मोस्ट प्रोबेबली विल डू दैट फ्रॉम मंडे. हम मंडे को यूआई डिजाइन करेंगे. सो जितना हो सके उतना वायरफ्रेम का टास्क कल रात तक कंप्लीट कर देना, क्योंकि उसके बेसिस पे ही हम यूआई बनाएंगे. ठीक है. Yes, that's it. So good work, guys. I am really happy with the output that you guys are giving. थोड़ा और polished work करो, alignment पे ध्यान दो, hierarchy पे ध्यान दो. but ठीक है, हो जाएगा. First time बना रहे, not an issue. But very good. I'm really impressed compared to the previous batches. I'll be very honest. Thank you so much. Thank you so much. Have a nice day. Have a nice good weekend, guys. Bye.